Good morning, students. Welcome to your e-learning class. This is your mathematics lecture, and today I am going to start Chapter-1, large number. Now, students, at first I am going to start with the period. When any number is separated into a group, it's called period. इसी नंबर को जब हम ग्रुप में सेपरेट करते हैं, ग्रुप के थ्रू उसको सेपरेट करते हैं, तो वो उसका पीरियड कहलाता है. लाइक द डिजिट 2, 4, 6, 9, 4, 5. We can separate it by inserting commas. Like in our Indian numeration system, ones, tens, hundred, thousand, 10,000, lakh. This is 2,46,945. ये इसको हमने क्या किया, पीरियड के अकॉर्डिंग इस डिजिट को सेपरेट कर दिया. पीरियड के अकॉर्डिंग इस डिजिट को क्या किया, हमने सेपरेट कर दिया. एंड नाउ स्टूडेंट्स, आपकी बुक में वंस पीरियड एंड थाउजेंड पीरियड बताया गया है. वंस पीरियड में हम वंस, टेंस, हंड्रेड को रखते हैं. वंस पीरियड के अंदर हम वंस, टेंस, हंड्रेड को रखते हैं. एंड थाउजेंड पीरियड में थाउजेंड एंड 10,000 को रखते हैं. थाउजेंड पीरियड में थाउजेंड एंड 10,000 को रखते हैं. एंड नाउ स्टूडेंट्स, हाउ कैन वी रीड द नंबर? Look, this is one period. One period में हम ones, tens, 100 को रखते हैं. And this is thousand period. इसके अंदर हम 1000 and 10,000 को रखते हैं. And we put any numbers in this column. This is ones, tens, 100, 1000, 10,000. This is 45,264. This is 45,264, and this one ones, tens, 100, 1000, 10,000. This is 10,510, and this one is 25,624. 25,624. And now, students, at last, representing the number on abacus. Representing the number on abacus. So students, at first we draw the period. हमें 45,264 को abacus पे दिखाना है. तो सबसे पहले ones, tens, 100, 1000, 10,000 मेंशन कर लेंगे. एंड नाउ put the digit at the appropriate place value. At the appropriate place value, that is 4 at 1st place, 6 at 10th place, 2 at 100 place, 5 at 1000 place, and 4 at the 10,000 place. 4 at the 10,000 place. Now draw the spike. Draw the spike. This is spike. And now draw the beats for the number. जैसे यहाँ 4 है, इसमें हम 4 beats लगाएंगे. 1, 2, 3, 4. यहाँ पे 6 है, तो 6 beats लगाएंगे. 1, 2, 3, 4, 5, 6. यहाँ पे 2 है तो 2 लगाएंगे. 1 2 5
1 2 3 4 5। यहाँ पे 4 है तो 4 बीट्स लगाएंगे, 1 2 3 4। So we can represent 45,264 on abacus by this method. Okay students, this is it for today. Till then, keep practicing. Thank you.